Yes. So let us start, sir. No problem. Yeah. So good evening, all the attendees. I welcome you all on behalf of I Am the Best Mom. And I Am the Best Mom is a platform where we are having the mission and vision of helping mothers to be the best version of themselves. So here we are not comparing any mother with other mother. Basically, every mother is best in her own self. So this is the objective. And as a part of this objective, I would be very happy to introduce and welcome Dr. Suneel Godbole, sir, who is a developmental pediatrician in Pune and head of department of Dinanath Mangeshkar Hospital. We have with him his better half and Dr. Ashwini Godbole, ma'am. She is a consultant in diet and in all aspects, both of them are helping the children with autism and other disabilities as well. So today's topic is how to manage the sensory issues in autism. And in the last topic, last month, we have discussed regarding the behavioral issues. This time we are discussing sensory issues in autism. And next episode, we will announce the date soon. But the next episode, we will be talking about the diet management and the food plate and how best you can manage it. That too in autism. So this topic we will be talking in the next session. So stay tuned and stay connected with us. And I'll hand over the session to ma'am and sir. And you can very well follow this anytime on imthebestmom.com. Even the previous session is available on the website. Over to you, sir and ma'am. Okay, thank you. Thank you all. So we welcome you to this particular today's session on sensory integration, the tools and tips when it is related to the children with autism and what parents can do at their home and on their own for these kids to help on that. So without wasting time, let's start working on that and we'll enjoy. I'm very sure you will interact and enjoy this session together. So when we think of sensory integration, Sunil, first let's introduce all to what are senses. Yeah. So आप लोगों को सभी को पता होगा 5 common senses which you all are introduced for your kids from pre-primary age. So first, vision, hearing, sense of smell, then the taste, and the skin is the biggest sense organ, that is the touch sense. So these are the commonest 5 common senses. Now, anything else than these senses? Yeah, before that, I wanted to highlight a very point that these senses are coming to us. We are really bombarded, attacked with millions of sensory stimuli every second, and we are taking them one by one, and our brain is processing them so fast that we are not even aware of these sensory stimuli. But surprisingly, apart from these 5 senses, there are 3 more. And these 5 senses are far senses. What is far senses? We can perceive these sensory inputs from a distance. But when it comes to the near senses, the other 3, which we are not at all aware, are called as the near sense or the power sense. So what are the power senses? There are 3 of them. One is the proprioceptive. Our muscles are every time, when you are seated right now, your posture, your muscles are getting the sensory inputs about how you want to sit, stand, what is the pressure you're going to put on your hips, and all these things are taken care by the sense called as a proprioceptive sense. And this I wanted to take as a message number 1. This unknown or the sense which are not unaware is going to help us to manage our children, because that is a tool to manage this case. What is the second sense? The second sense is the balance. So when you are driving a car, when you are walking down the stairs, every time our balancing sensory inputs are helping us to take care of our body. This is another tool on which we are going to work in this particular workshop. And the third, the interoception. It appears to be a bit difficult now, but what is it? Sense of thirst, sense of hunger, sense of urine, sense of motion, sense of what are all these headaches, inside problems, are all these sensory inputs which are from within, are the near or power senses. And these senses are as important as the 5 far senses. So now we know at the beginning we have got 8 senses to go ahead. Now let's go ahead. So while going ahead, sir, what are sensory processing disorders? Now let's understand this sensory processing or integration from its basic. So when we are sitting together,
And when we are talking to somebody, for example, you are talking to me, and if I ask you, just close your eyes for 15 to 20 seconds and listen to the sounds around you. You'll surprisingly note that apart from my or Ashwini's voice, you're probably, if the fan is going on in your house, you'll be listening to that. Your children, if they're crying, enjoying, laughing, you'll be listening to that. So vehicles going by. So your body is getting responses from all these different senses. But surprisingly, at the same time, you are able to mask them, filter them out, and listen to me. This ability of our body to selectively use the sensory inputs and focus on them is called as a sensory processing. And now, or sensory integration. And now, when the body is unable to perceive, so if the body is unable to get the senses or organize, select them, and respond to the stimuli properly, then we call it as a sensory processing disorder. And when this thing happens, unfortunately, this influences our behavior. For example, there is a lot of cold. The temperatures are going towards 0 degrees, and you are just on you're not having a proper warm clothing. What you do? You try to keep yourself warm. This is a sensory processing. If that is not happening, your behavior is going to be problematic. The child's, if it is happening with a child is unable to learn properly. His movements are going to affect. When it comes to proprioceptive or the vestibular stimuli, his movements are going to get affected. And on top of that, his coordination within the body is also going to affect it. So it is presented when it comes to the physiotherapist or occupation, what they will say, that the child is unable to have this motor problem because of sensory issues. So all this comes as sensory processing disorder. Sensory processing or integration disorders are common in 5 to 10 percent of the general population. But when it comes to autism, the number is bit different. It is 8 in 10. That means 80% of the children with autism are going to have some or other sensory problem, sensory processing disorder. And that is why today we are going to think of how to manage these sensory problems. So now let's go ahead. We are going to actually go through the management of these things. So take home message from this slide is, in the kids of autism, sensory processing disorders are quite very common. And we should remember them as a very separate entity. Okay. So now, sir, what are the common features, as we medically call signs of the processing, the sensory actually, processing? for as a parent, you will be very looking for these things. So typically, these children with sensory processing problem are having selective hearing. The mother will say that sometimes my listen, उसको जब चाहता है, जब उसको पसंदीदा चीज है, तब वो तुरंत सुनता है. लेकिन जब मैं कुछ ऑर्डर देती हूँ, वो सुनता ही नहीं. और सम टाइम आजू बाजू बहुत सारा आवाज है, बट ये सिलेक्टिव हेयरिंग है, वो अपने दुनिया में खोया रहता है. Another sensory problem issues. There's sometimes problem with the gustatory part. The child is selective eater, so the child will refuse. This is different from the typical behavioral picky eater child. These children have a very selective eating habit. Sometimes they don't want to chew, so if they give them something which is sticky or slimy, they won't eat. But there is a crispy thing, they may like it. So all these things are sensory issues. Then कभी कभी छोटे बच्चे रहते हैं, कोई स्ट्रेंजर आ गया तो तुरंत आके, अपने दोस्त आ गया तो उसको गोद में लेता है, हाय बेटा, हाउ आर यू, एंड ही टचेस द चाइल्ड. एंड द सेम सिंपल family touch, actually this is a very loving touch, but the child gets excited, irritated. So responding to the hugs and contact by adversely or irritating is something sensory processing disorder. These children, they sometimes perceive, now the proprioceptive or a touch part of the soles, they perceive the ground differently. And now that comes to the common problem which many of you may be facing, is a tiptoe walking. Child walks on the toes. So one of the cause of toe walking is the sensory processing of tactile and pressure stimuli, that is a proprioceptive. So there is some disorder there. Yeah, so there is a sensory disorder, and interesting part, correctable. So that's what I want to say about this. Another thing is, these children are having sometimes a very different reaction to the dressing. So some children may find even the elastic of the simple elastic of the trousers, they may find it a bit tight and they get irritated. A simple tag of which is on their t-shirt, that tag may irritate the child to such an extent that वो t-shirt निकालने की कोशिश करेगा.
शूज पहन लिए तो शूज उसको टाइट हो जाते हैं, शूज में उसको बस, सो दीज आर ऑल अगेन सेंसरी इश्यूज। सेम थिंग, अभी उसका सेंस प्रोप्रियोसेप्टिव और टैक्टाइल अच्छा नहीं रहता, उनका लिखने में फाइन स्किल में प्रॉब्लम आता है, एंड दे डोंट होल्ड अ पेंसिल प्रॉब्लम and they get a coordination issues because of the sensory causes. So it's a sensory coordination problem. So that is because of the fingers they are having. Sometimes these children, because their test is not problematic in that case, so they may eat something like chalk powder or what we call pica, eating something which is not nutritional value. So they may chew the eraser. So all these things come with the sensory. Then you must have found that many kids, उनके हाथ में कुछ भी आ गया, तो instead of looking at it, they may test it or they may smell it. It may be again a sensory issue which encompasses the whole diagnosis of autism. So we need to be remembering all that. And sometimes some kids थोड़ा लाउड ना, कुकर की सीटी बज गई, वो क्या करते, कान के ऊपर हाथ लग देते. This is again the hypersensitivity to the normal sounds. And सब ये mothers के लिए manage करने के लिए बहुत difficult हो जाता है. And that is what we need to be careful about. Okay, so that's one thing. Now we are very So we clear have about seen it. the features of these sensory processing disorders, and with these features, why do these sensory processing disorders occur? Okay, now you are going into a bit difficult area to discuss, but I like to be answering this question bit more detail. Apna brain, it's a brain which is now controlling all the senses. And it is found out that brain में जो बाहर का और अंदर का रहता है, तो अंदर का जो एरिया रहता है जिसको हम ग्रे मैटर बोलते हैं, और बाहर का जो एरिया रहता है उसको व्हाइट मैटर बोलते हैं. और ये जो व्हाइट मैटर है, बाहर का एरिया जहाँ पे पूरा प्रोसेसिंग होता है, वहाँ का जो अपना ऑडिटरी सिस्टम है, अपना विजुअल सिस्टम है, अपना टैक्टाइल, यू कैन सी द, यू कैन अंडरस्टैंड दैट, ये पीछे विजुअल कॉर्टेक्स नाना पाटेकर का, यहाँ मत मारो, छोटा बिंदु होता है, वो एरिया में उसके ऊपर अपना विजुअल कॉर्टेक्स रहता है. वहां पे सेंसरी एरिया, जो स्पीच का एरिया जो बाजू में रहता है, मोटर एरिया सामने फ्रंटल एरिया के पीछे रहता है, और यहाँ पे बीच में दोनों साइड पे इमेजिन करो कि आपने एक हेयर बैंड लगाया है, दैट इज अ हेयर बैंड का एरिया इज अ सेंसरी एरिया. सो दिस सेंसरी एरिया is going to be important, which is having a problems in these connections. So there are abnormal connections in this area which cause the sensory processing problem. One more thing to remember is now this sensory motor area, यहाँ पे जो एरिया इनपुट्स आ जाते हैं, this उसका प्रोसेसिंग, एक साथ बहुत सारे इनपुट दिमाग में आ जाते हैं, उसका प्रोसेसिंग करने में बच्चों को दिक्कत होती है, एंड दैट इज व्हाई द सेंसरी एरिया कंप्यूटर. बट यहाँ पे आपको लिए आज घर जाने का पॉइंट रिमेम्बर रखने का, एक्चुअली घर पे बैठे हो लेकिन दिमाग में रखने का पॉइंट है, व्हाट इज इम्पोर्टेंट, उनका विजुअल सेंसरी इनपुट अच्छे रहते हैं. सरप्राइजिंगली, इवन दो दे आर नॉट, I remember, I want to utter the word again, they are not having a good eye contact, but are they seeing the things around? They are seeing the things around very well. So now you are aware that it is that hairband area, which is the sensory motor cortex, which is having the problems with the connections. So वहां से ये problem आ जाता है, and that is what we need to be working upon. तो ये सब सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स, इसका हमने पहले देख लिया कि ये सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर क्या रहते हैं, ये जनरल पॉपुलेशन में भी रहते हैं मगर ऑटिज्म के बच्चों में ज्यादा रहते हैं. फिर इसका रीजन देख लिया है, उसके फीचर्स देख लिए. तो अभी ये बच्चे, जिन बच्चों में ऑटिज्म जैसे फीचर है और सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर के साथ में सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है, तो इनको अप्रोच कैसे किया जाता है? Okay. So the approach is now, हमें पता चल रहा है कि ऐसा कुछ रहता है कि हमें 5 सेंसर्स प्लस 3 सेशंस रहते हैं, एंड इन सेंसर्स का आपस में कंट्रोल नहीं होता है, देयर इज समथिंग अ सेंसरी प्रोसेसिंग इशू. तो इसके में अभी हाउ टू अप्रोच, तो पहले हमें पता चला अपने पास सेंसर्स कितने, 5 + 3 8. ये 8 सेंसर्स में से कौन सा सेंस अफेक्ट हो रहा है, एक नहीं शायद 2-3 भी, ये हमें पहले पता करना. दूसरा, एक मैं आपको एक टेक्निक सिखाने वाला हूं जिसको हम सेंसरी क्वाड्रेंट बोलते हैं, तो वो कैसे किस तरीके से अफेक्ट हुआ है इसके बारे में हमें समझना है. तीसरा, उससे उसके लाइफ पे क्या सीवियर इश्यूज आ रहे हैं, ये हमें असर क्या पड़ रहा है, या उसका असर क्या पड़ रहा है, ये हमें देखना है. एंड फिर ये तीनों को समझ के अपना प्लान ऑफ एक्शन बनाना है.
तो पहली स्टेप हम करेंगे, और ये करते वक्त मुझे अब आप सभी की I want you to all to be attentive and answering the questions in the chat box. जो last time थे, I'm very happy. I enjoyed people answering those questions in the chat box. आज भी आपको यही करना है. तो we'll start one by one. तो इसके लिए सर एक अप्रोच तो आपने दे दिया. पहले सेंसेस आइडेंटिफाई कीजिए, फिर सेंसरी क्वाड्रेंट और फिर सीवियरिटी. तो इसमें अगर हम आगे जाए तो 8 सेंसेस का आपने बोल दिया. अभी आगे का सर सेंसरी क्वाड्रेंट. जस्ट टू मेक you remember, touch, auditory, visual, proprioceptive, vestibular, that is balancing, olfactory, gustatory and within the body senses. आज within the body को हम थोड़ा बाजू रखने वाले. Okay, so let's go one by one. We'll discuss in terms of common cases or the common presentation. लेकिन ये 8 सेंसेस के बारे में अभी पता करके रखेंगे. पहले क्वाड्रेंट जो कंसेप्ट है, जो जरा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, बट अगर समझ लोगे तो आपका काम एज अ पेरेंट बहुत आसान होने वाला है. तो कैसे करेंगे, अभी समझ लो. आपका बच्चा का और आपका खुद का भी, यू कैन असेस योर ओन प्रॉब्लम्स एज वेल. आपके खुद के प्रॉब्लम आप इसमें समझ सकते हो. तो उसमें हमारा हर आवाज को समझने का थ्रेशोल्ड लेवल अलग अलग रहती है. तो किसी को, फॉर एग्जाम्पल कुकर की सीटी का एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं कि किसी को कुकर की सीटी बज गई, कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका थ्रेशोल्ड हाई रहता है. कितना भी आजू बाजू शोर हो वो फोकस रहता है, इसका थ्रेशोल्ड हाई रहता है. तो आवाज ज्यादा हो तो भी एक्सेप्टेंस इज अ हाई थ्रेशोल्ड, ये दिमाग में रखो. और कभी उल्टा होता है, थोड़ा बाजू वाले बिल्डिंग में कुछ गिरा, बाजू वाले के घर में कुछ गिरा, तो उसका छोटा सा आवाज भी यहाँ पे टेंशन देता है और इरिटेशन करता है. दैट इज लो थ्रेशोल्ड. तो हम बोलते हैं पिन गिर गए तो अभी डिस्टर्ब होने वाले लोग लो थ्रेशोल्ड वाले रहते हैं. तो ज्यादा आवाज से कुछ फर्क न पड़ने वाले लोग हाई थ्रेशोल्ड रहते हैं, और बहुत छोटे आवाज को डिस्टर्ब होने वाले लोग लो थ्रेशोल्ड रहते हैं. तो ये एक वर्टिकल एक्सिस बन गया. ये आपको आज दिमाग आपके सामने दिमाग हो गया. हमारे सामने एक क्रॉस है, तो क्रॉस के ऊपर हाई थ्रेशोल्ड है, क्रॉस के नीचे लो थ्रेशोल्ड है. क्रॉस का एक्स एक्सिस था द आईडी लाइन. तो इसको रिस्पॉन्स हम क्या करेंगे अगर ऐसा आवाज आ गया, पर तो बड़ा आवाज आ गया. हाँ, तो एक तो हो सकता है कि बड़ा आवाज आ गया, हाई थ्रेशोल्ड, कुछ फर्क नहीं, बट आवाज को रिस्पॉन्स देना. तो दो तरीके के लोग रहेंगे. कुछ लोग आवाज को इतना रिस्पॉन्स देंगे कि आवाज उससे छोटा पड़ जाएगा, जिसको हम एक्टिव रिस्पॉन्स बोलते हैं, ओवर एक्टिव, हाइपर एक्टिव रिस्पॉन्स. एट द सेम टाइम देयर आर अदर चिल्ड्रन और अदर पीपल, वो उसी आवाज को बहुत कम निग्लेक्ट भी करेंगे. कुछ करन है, आपने दुनिया में खुश है, तो आजू बाजू कुछ भी चल रहा हो, मैं मेरा काम अच्छी तरह से करूं, उसका रिस्पॉन्स ऐसा नहीं कि उनको आवाज सुनाई नहीं देता. सो देयर पैसिव रिस्पॉन्डर. तो पैसिव रिस्पॉन्डर ज्यादा ओवर एक्टिव रिस्पॉन्डर, बीच में नॉर्मल है. हाई थ्रेशोल्ड, लो थ्रेशोल्ड. अभी अगर आपने देखा जाएगा ये 4 एक बार दोगे तो हमें 4 क्वाड्रेंट, 4 एरियाज बन जाए. अभी एक एग्जांपल वही कुकर की सीटी का लेते हैं. ओके, हाँ, बिकॉज किसी ने रिक्वेस्ट किया है इन इंग्लिश, बट कोई लोग बोल रहे हैं हिंदी में चाहिए. तो लास्ट टाइम हमें हिंदी की ऑर्डर मिली थी और मेरा हिंदी तो डेंजर है. तो बट आई विल ट्राई both the ends together. So Dhanlakshmi madam, thank you for your response, but I will prefer to have a WhatsApp language, but I will repeat the things again in English and Hindi so that everybody will understand. I take your message. ओके, क्वेश्चंस तो हम सबसे मैं आप लिखते रहिए, बट मैं क्वेश्चंस को बाद में सॉल्व करना. शायद आपके क्वेश्चंस के आंसर अभी मिलने वाले भी है, चिंता मत करो. ओके, तो नाउ हाई थ्रेशोल्ड यानी आवाज कितना भी बड़ा हो, मैं सह लगता, और मुझे कभी कभी आवाज अच्छा, बड़ा आवाज अच्छा लगता भी है. दी हाई थ्रेशोल्ड, और उसके ऊपर मेरा रिस्पॉन्स उतना ही ज्यादा है. तो फॉर एग्जांपल कुकर, मम्मी ने मिक्सर स्टार्ट किया. नाउ लेट्स शिफ्ट फ्रॉम द कुकर की सिटी टू समथिंग कंट्रोलेबल. मम्मी ने मिक्सर शुरू किया, तो when the mixer starts, a child with high threshold, he will enjoy that sound. Wow, something is interesting which is happening, and he will run to the kitchen and ask the mummy, वापस चालू करो. And मम्मी बोली क्या चल रहा है. So ये ओवर एक्टिव चाइल्ड हो गया. तो लार्ज साउंड्स भी एक्सेप्ट कर रहा है और उसके लिए और डिमांड कर रहा है.
इसको हम ये क्या बोलते हैं, क्रेविंग और सीकिंग. दे वांट मोर आइडिया, सो दैट इज अ क्रेवर. सो अ क्रेवर. नाउ एक हमारा क्वाड्रेंट बन गया. तो हाई थ्रेशोल्ड एंड high overactivity for that sound, so it knows more sound, more lights, more taste, height, something like all they become the cravers. अभी हाई थ्रेशोल्ड तो है लेकिन मैं रिस्पॉन्ड नहीं करने वाला. तो मैं कितना भी आवाज हो, आई एम नॉट गोइंग टू रिस्पॉन्ड. मैं मेरे दुनिया में रहने वाला. सो रिक्वायर लॉट ऑफ स्टिमुलस. तो बहुत बड़ा तब जाके मैं डिस्टर्ब होने वाला. सो इवन दो द स्टिमुलस इज वेरी हाई, I may not respond, and that too, my response is minimal. So ये बच्चे आजू बाजू जो चल रहा है उसको ध्यान नहीं दे रहे. They are disregarding. So now, high threshold overactive is a craver. High threshold passive is a disregarder. अभी उल्टा करते हैं कि थोड़े साउंड को भी डिस्टर्ब होने वाले बच्चे, एंड उस वक्त फॉर एग्जाम्पल ये मिक्सर चालू हो गया मम्मी ने, तो उसको ऐसा लगता है कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो गया, एंड द चाइल्ड रिएक्ट्स एग्रेसिवली, स्टार्ट्स क्राइंग, स्टार्ट्स स्क्रीमिंग, कान पे हाथ रखता है. दिस चाइल्ड इज अवॉइडिंग द रिस्पॉन्स. सो ये हमें ध्यान में रखने का. सो दिस इज अ अवॉइडर. सो ये तीसरा पार्ट हो गया. लो थ्रेशोल्ड ओवर एक्टिव. अभी बचा क्या? बचा लो थ्रेशोल्ड एंड पैसिव. यानी आवाज सुना, मम्मी ने मिक्सर ऑन किया तो उसकी तरफ देखा, अरे मिक्सर चालू हो गया, बट अपने काम में जुट गया. ये क्या है? नॉर्मल, आप और हम, टिपिकल. सो आई विल रिवाइज इट अगेन. हाई थ्रेशोल्ड, आवाज कितना भी वो फर्क उनको अच्छा लगता है एंड वो और चाहिए, दैट इज अ सीकर और क्रेवर. हाई थ्रेशोल्ड एंड ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं देने वाला, चलने दो जो कुछ चलने, आज वो डिसरिगार्डर. लो थ्रेशोल्ड, थोड़ा होगा तो भी डिस्टर्ब होने वाला है और ज्यादा रिस्पॉन्ड करने वाला है, कान, दैट इज अ अवॉइडर. एंड लो थ्रेशोल्ड पैसिव इज अ टिपिकल चाइल्ड. अगर आपको ये 4 चीजें समझ आ गई तो मानो आपको सेंसरी थेरेपी पता चल गई. कैसे चलेगी आगे देखते हैं. ठीक है. तो अभी सेंसरी क्वाड्रेंट्स हो गए, मगर इसका बच्चे पे कितना असर हो रहा है, इससे कुछ डिसीजन लिया जा सकता है? क्योंकि ये सब है आप और हमारे में. बाकी छोड़ो, मेरा भी, मुझे ज्यादा आवाज पसंद नहीं. थोड़ा टीवी का साउंड बन गया तो मैं मेरे बच्चे को थोड़ा आवाज कम करो. सो दैट इज आई एम सेंसिटिव टू द लाउड साउंड. बराबर है. बट ये मेरे रोज के लाइफ में एक्सेप्ट होता है, उसे कुछ ज्यादा झगड़े नहीं होते हैं. सो द चाइल्ड हु इज एबल टू मैनेज एट होम और इन द स्कूल, बट थोड़ा ज्यादा गड़बड़ हो गया तभी डिस्टर्ब हो जाता है. हाँ, उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, बट इज एबल टू मैनेज हिमसेल्फ एंड रूटीन्स. उसके ऐसे बच्चों में ज्यादा चेंजेस अच्छे नहीं लगते. दे हैव गॉट अ स्ट्रिक्ट रूटीन्स, दे आर कंपल्सिव, उनके इंटरेस्ट भी ज्यादा नहीं रहते. सो दीज किड्स आर माइल्ड सेंसरी इश्यूज. सेकंड लेवल पे ये सेंसरी इतने रहते हैं कि वो डिस्टर्ब होने लगते हैं घर में, स्कूल में, पार्टीज में, लोगों में जाके. तो हैप्पी बर्थडे पार्टी में गए और कुछ थोड़ा ज्यादा आवाज हो गया, गेट्स डिस्टर्ब. कि थिएटर हॉल में, थिएटर में मूवी देखने को गए और मूवी में जो फ्लैशी लाइटिंग है उससे डिस्टर्ब हो गए. दैट इज मॉडरेट. These children are definitely getting affected. उनकी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है. सो दिस इज अ मॉडरेट सिवियरिटी ऑफ सेंसरी प्रोसेसिंग. और तीसरी लेवल क्या है? व्हेन देयर नॉट अ लॉट ऑफ बेसिक सेल्फ केयर, उनको बहुत कुछ सेल्फ केयर की नीड रहती है, उनको खुद के सेंसेस संभाले नहीं जाते एंड ऑब्वियसली अनकंफर्टेबल ऑल द डे. These kids are problematic. अभी क्या होता है, उनको कोई कुछ लोगों को ओरोमोटर सेंसिटिविटी रहती है, उनको और सीकिंग रहता है. नाउ आई वांटेड टू अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि अगर इनकी ओरोमोटर सेंसिटिविटी बहुत है, क्रेवर है, तो क्या करेंगे? बाइटिंग, सेल्फ इंजुरियस बिहेवियर, दूसरे बच्चों को बाइट करना. तो व्हाई दिस थिंग कम, दिस सेल्फ इंजुरियस बिहेवियर इज वन ऑफ द सीवियर फॉर्म ऑफ craving for a oromotor sensitivity. So we are getting, now you'll understand that why we are going to discuss all these things together, because sensory processing disorder, if managed very well, will give a very good response to your child's management. So, यानी कि अभी आपने 4 वर्ड्स बोले, एक तो नॉर्मल टिपिकल, फिर आपने एक वर्ड बोला डिसरिगार्डर, एक क्रेवर और अवॉइडर, और आपने सिवियरिटी बोली माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर. तो अभी आगे जाके मैं आपको कुछ सिनेरियोज देने वाली हूँ और आप उस पर डिस्कशन करेंगे मेरे साथ. अभी
अब मेरे साथ जुड़े हुए 100 जो कुछ अटेंडीज है, पेरेंट्स है, आप सब लोग मेरे साथ इसका आंसर ढूंढने वाले हैं। आंसर के लिए मुझे आपके से 3 आंसर चाहिए। पहला, कौन सा सेंस इन्वॉल्व है? दूसरा, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? क्रेवर, डिसरिगार्डर, टिपिकल और अवॉइडर। और तीसरा, कितना सीवियर है? चलो ये पजल सॉल्व करने का कोशिश एक साथ करते हैं। आर यू रेडी? सो यू हैव टू गिव योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स। ओके अश्विन। तो अभी पहला सिनेरियो है, 5-year गर्ल है, शी एंजॉय स्पिनिंग, शी गेट्स डिजी इन बिटवीन, बट आफ्टर सम टाइम शी सेटल्स विथ रेस्ट. Secondly, she can walk in the straight line very well. She's able to manage herself in all the settings. So how we can put her? So my dear parents, which sense is involved? Can you put it in it? I'll repeat the senses for you. Yes, no, Here. not the touch. So नहीं, touch तो नहीं है. Okay, Spinning, normal vestibular. So I get the yes. answer with Parul. Thank you for that. So this is vestibular. Gaurav, now I think we'll जो पहले दोनों को हम पिकअप करते हैं और आगे जाते हैं. So it's a vestibular sense. Now let me know whether it is normal or abnormal. She's settling after some time. She was having dizziness initially, but settling after the rest. Normal, yes. Normal yes. है. ये सीकर क्यों नहीं है? क्योंकि अगर सीकर बोले तो they won't settle. They continue. Thank you. So we'll stop with that point. So it's a now. हमें दूसरा पार्ट मिल गया. Vestibular, normal. Now let me know whether it is a mild, is it or say moderate or severe. आप इसको क्या बोलोगे? Yes. So you are all aware. Now this particular case, this girl who is spinning, but she's enjoying spinning for a thank you. Now we can stop with that. So we are now get a complete diagnosis. The diagnosis क्या है? Vestibular sense है. It's normal and it is mild. So it's typical and mild. तो अपने quadrant में वो typical में बैठ गया. अपने 8 senses में वो vestibular पे आ गया और severity में वो mild है. इसके लिए कुछ करना चाहिए क्या? ज्यादा जरूरत उसके साथ खुद भी एंजॉय करना चाहिए because the child is behaving normally. Now let's just have a second question. Yeah. तो अभी दूसरा सिनेरियो, 7-year girl, she always hugs her mother, but even not only mother, she hugs guest also. Yeah. Always bumps as well as crashes. She keeps on jumping a lot here and there, and whenever she is at rest, she grinds her teeth. She's unable to attend the social functions, and the whole family is disturbed. So how to proceed? Which sense? किसी ने टच बोला लेकिन टच में हग नहीं, हग में कुछ और है. Yes, Parul, you are again on the dot. So it is proprioceptive. So it's a proprioceptive. Pressure है. Hug is a pressure. Bumping and crashing. नीचे से pressure है. Teeth grinding. Pressure है. So all this is a proprioceptive. Wonderful. Now I wanted to know whether this is what type of quadrant it is. Now second question. The child is, I wanted to understand out of the 4 words, seeker or craver, then disregarder, then typical and avoider. Yeah, avoider है क्या? नहीं. She's asking again and again. So if you are coming right on the dot, मेरा काम आसान हो रहा है. So this child is a craver or seeker. Wonderful. Now we have got 2 answers, proprioceptive and craver. तीसरा answer, is this problem mild, moderate or severe? तो proprioceptive craver. Now proprioceptive craver. Why moderate? The answer is yes. Unable to attend social function, whole family disturbed, but still she is managing herself. So it's correct. You are moderate. Somebody may put it severe as well, but it's moderate is one thing which I am accepting. So moderate, proprioceptive, craver. So you got the diagnosis on the bullet. Now let's go ahead. The third. Now the third scenario. Here is a 3-year-old boy. He reacts strongly even to a simple light touch. He walks on the toes. Then he avoids handshake. Specifically, he doesn't like the messy food, which is like rice dal. He's really fussy with clothes and tags up the t-shirt. His issue is a lot with eating as well as with clothing, toileting, everything. And he's unable to go to school. ग्रेट. पहले मानसी ओसवाल का स्वागत करते हैं. उसके लिए बोलते हैं व्हाट आर द 8 थिंग. इसके आगे जाने के पहले टच, हियर, 8 सेंसेस कौन से? हियरिंग, विजन, स्मेल, ऑडिटरी, टच, proprioceptive, pressure, balancing and internal
thirst, hunger, all those things. Now for this person, which type of sense it is? Which type of it is? Touch. I'm very happy. This is touch. Now what is the second level? Somebody has answered. Whether it's a craver, avoider, disregarder, avoider, or typical, what happening is वहां पे आंसर ही दिया मैंने. He avoids handshake. So what is the answer? It's Touch. a avoider. So now we got touch, avoider. What is the level? Severe. Yes. So this child is a tactile avoider of a severe category. Thank you. I think all of you are picking well, but some वही लोग बार-बार बोल रहे हैं. I want all of you to answer the जितना fastest finger first ऐसे करोगे तो और मजा आएगा. Now let's go ahead with the next answer. Now Yeah. here is a 5-year boy. He doesn't pay attention to blackboard at all. Then he's not even, what I can say, bothered with the bright light. He stares at faces, not seeming to see them. Independent in all the daily living activities. He gets disturbed only when he gets stressed. So how to go ahead? With sense? Yes, absolutely. Everybody. I think quadrant. Do you? Everyone. Sajal Deshmukh is asking for the quadrant. Now let's quickly describe it again. So before going ahead, तो ज्यादा थ्रेशोल्ड, बहुत सारा साउंड चाहिए एंड उसके लिए बहुत सारा रिस्पॉन्ड करता है. एवरी आई वांट मोर. दैट टिपिकल दिल मांगे मोर आर द क्रेवर्स. आप कुछ भी करो मुझे फर्क नहीं पड़ता. दे आर डिसरिगार्डर्स. आप थोड़ा भी करो मुझे फर्क पड़ता है, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं. दे आर अवॉइडर्स. एंड द लास्ट पार्ट इज आप जो करते हो मुझे समझ आ रहा है और मैं आपको रिस्पॉन्ड करने में उतना ही रिस्पॉन्ड करने में. टिपिकल. अभी इसके बारे में देखते हैं. तो विद दैट आंसर has answered very well. Yeah. So this is a which sense? It is a visual disregarder. Now the third question is that answer is, I think mild. Severity, they are saying mild. Moderate मैं नहीं पसंद करूंगा diagnosis क्योंकि it appears to be mild for the simple reason that the child is independent in daily living activities. So this is a mild visual disregarder. Yeah. It is not seeker because the child is not doesn't paying attention to the blackboard. That is a real problem. The child is not getting to the bright lights as well. So this is a typical disregarder. So now we have got a mild visual disregarder. Let's go ahead. So the next scenario, 6 years old boy, he alerts to sound, especially loud sounds, and then he adapts, tolerates crowds, and then the noisy places. And he enjoys singing and clapping. Now, what type of sense this is? Auditory? Yes, everybody agrees, or something more than that? Yes, it is auditory. Now, let me know the quadrant. Normal, yeah. Normal comes, it's not normal. I will call it normal is not. I will prefer to use typical. So it's a typical child. So it's a typical, again, it is not seeker. So it's an auditory, typical. Abhi mild, moderate, severe mein kya hai? Amrita has got it together. Auditory, typical, mild. I think you're all getting sensory integration therapists. आज इस गैदरिंग में कोई सेंसरी थेरेपिस्ट हो तो उनको अभी संभाल के रहना पड़ेगा क्योंकि all these parents are going to be a very good sensory therapist for their children. So now let's go ahead. So it's an auditory part. Huh? Now the next scenario, 4 years boy, he seeks strong odors, especially paints, glues, and all those cleaning material which is kept in the house. Frequently he sniffs the food and then only he eats. Along with that, he sniffs the objects. Then the next thing, he jumps to others' plates and sniffs the food also. It's difficult to manage, especially in social situations and gatherings. So, which sense this is? आजकल sanitizer के बारे में ज़्यादा बढ़ रहा है. So this is olfactory, right on the point. Now, what is this type? Olfactory, craver, wow, then severity. Olfactory, craver, difficult to manage in situation. Again, this answer can be moderate or severe, but he is able to go to people. वो लोगों के पास जा रहा है, so it is likely that it is absolutely difficult nahi hai. So it doesn't appear to be the severe one. So the answer here is olfactory,
craver, moderate level. Good. Now let's go ahead with So the we next. will just modify two words for the parents. One is whenever it is olfactory, it is with the sense of smell. And when it is with the taste, it is gustatory. So It is a- gustatory is taste, olfactory is smell. Olfactory smell, gustatory taste. Okay. Now, 5 years girl, she can eat very spicy food. Okay. And it is without any reaction. She eats hot chutney comfortably. Her taste of the chutney, it doesn't matter to her. It's a very simple explanation. So can somebody go ahead with this scenario? Taste. So it's a Yes. gustatory. Yes. Yes, absolutely right. So gustatory, disregarder, and mild. Absolutely on the dot. So now you are able to understand the sensory processes, sensory integration on 3 levels: the senses, the quadrant, and the mild, moderate, severe. So you are able to now, you are really able to manage these things. Now only thing you should be remembering, आज मैंने सब आपको separate करके दिया है. There will be a child who will be seeker of sound, avoider of light, disregarder of taste, and probably typical in all other things. So it may be a mix in this case. In this particular case, आप जो बोल रहे कि why not seeker? So the simple, because hot chutney comfortably खा रही है, but उसको taste, now the word catchword was taste doesn't matter to her. If the taste is mattering to her and she want more and dil mange more, then it will be seeker. So अमृता मैडम आपका आंसर यहाँ पे है कि टेस्ट डजंट मैटर टू हर. तो आपको टेस्ट क्या, दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू आंसर इट एज अ डिसरिगार्ड. नाउ लेट्स गो अहेड विद द थिंग. या सो अभी ये जो हमने डिफरेंट सिनेरियोज देख ले, तो ये सब सेंसरी प्रोसेसिंग डिफिकल्टीज, डिसऑर्डर्स जो भी रहते हैं, तो इनको मैनेज करने के लिए, एड्रेस करने के लिए पेरेंट्स को घर पे कौन-कौन सी टेक्निक्स दे कैन यूज. यहीं पे some food texture like dry wet, will it is not touch, it is actually oromotor sensitivity. Oromotor थोड़ा सा different topic है, but उसमें gustatory part भी आता है, the taste part आता है, and the pressure part भी आता है. तो crunchy चीजें खाना है, dry crunchy food item, that texture, it is also associated with the taste, one, oromotor part, two, and the pressure, the proprioceptive part. While the slimy sticky, यहाँ पे टच का भी पार्ट आता है, वहां पे गस्टेटरी का भी पार्ट आता है, प्रोप्रियोसेप्टिव अलग तरीके से काम करता है. बट दिस इज व्हाट यू आर एब्सोल्युटली राइट. ये थोड़ा सा अलग से है, जहाँ पे ओरोमोटर सेंसेस, ये अलग टॉपिक है, कभी कोई उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं. एंड इसमें ज्योग्राफिक टंग का रिलेशन ज्यादा नहीं है. ज्योग्राफिक टंग इज अ प्रेजेंटेशन ऑन द टंग, it need not be related to the sensory or hyper or hyposensory, it is not related to that. But if it is, जिसको हम थ्रश बोलते हैं, मुंह आना बोलते हैं, ओरल थ्रश आता है, मुंह में छाले होते हैं, वहां पे अलग चीज है, वहां पे सेंसिटिविटी बहुत बढ़ जाती है, बट टेम्पररी रहती है. इट इज नॉट लॉन्ग टर्म एंड इट हैज टू बी ट्रीटेड विद टमी इन माइंड. गट ब्रेन एक्सिस के बारे में और एक बार अगले टाइम डिस्कस करने वाले. ओके, नाउ लेट्स गो अहेड. So now the techniques for addressing this sensory processing difficulties at home, what parents can do. Yeah, so अपने हाथ टाइम कम है, बहुत कम टाइम है हमें पूरा कवर करने का, जिसके लिए लोग 200-300 पेजेस का बुक लिखते हैं. तो नाउ लेट्स गो अहेड. सो व्हाट आर द टेक्निक्स. टेक्निक्स 3 लेवल पे हम डिसाइड करेंगे. लेवल 1, यू हैव टू थिंक ऑफ समथिंग कॉल्ड एज अ सेंसरी स्ट्रेटेजीज. प्रॉब्लम समझ के, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड देन वर्क ऑन इट. इट इज अ सेंसरी स्ट्रेटेजीज, विल डिस्कस इन डिटेल. सेकंड पार्ट इज सेंसरी डाइट. दिन भर में पूरा ऐसे तरीके से काम करना कि वी नो हिज सेंसरी प्रॉब्लम्स एंड गिव हिम द डाइट. जैसे हम फूड देते हैं वैसे सेंसरी इनपुट्स देना है, दैट इज सेंसरी डाइट्स. एंड द तीसरा पार्ट, पता है तो प्रिवेंट क्यों नहीं करेंगे, सेंसरी प्रिवेंशन. सो सेंसरी स्ट्रेटेजीज, सेंसरी डाइट एंड सेंसरी प्रिवेंशन. नाउ लेट्स वर्क ऑन दैट. सो तो पहले सर सेंसरी स्ट्रेटेजीज में जाए तो अवॉइडर बच्चे के लिए क्या कर सकते हैं. Avoider doesn't want that particular sense to get happening on that and get irritated by that. So for the avoider, we should way to make it a point that in the environment we reduce that type of sensory input so that the child doesn't want to escape. अगर आप जो लोगों ने behavior का lecture attend किया उनको याद है escape रहता है,
तो उनको उसमें से निकलना रहता है. बट ये अवॉइड करने के लिए व्हाट वी हैव टू अवॉइड सच इनपुट्स. तो फॉर एग्जांपल द मिक्सर का पार्ट, व्हेन वी आर अवेयर दैट द चाइल्ड इज फोकसिंग ऑन सम स्टडीज और एक्टिविटी, मम्मी जी को मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मिक्सर का काम थोड़ी देर के बाद करो. किसी बच्चे को जिसको अजूज का पिक्चर्स एंड कलरफुल बहुत बच्चों के, फॉर एग्जाम्पल मेरे खुद के क्लिनिक पे, हमारे क्लिनिक इज हैविंग लॉट्स ऑफ पिक्चर्स एंड ड्राइंग अक्रॉस द, कभी कभी ये बच्चों को उनसे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं. सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू रिड्यूस दोज पिक्चर्स. सो जो एक्चुअली थेरेपी रूम्स रहते हैं, इंक्लूडिंग माय ओन सेटिंग, वी अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस इन द रूम सो दैट द चाइल्ड is kept at its limit. So that is avoided. So we need to, and now अगर ऐसे में भी उसको अगर सिखाना है, मिक्सर तो घर पे चलने वाला है, तो ऐसे में सिखाना है, तो यहाँ पे we have to introduce the concept gently, जिसको हम sensory, difficult word है, sensory desensitization बोलते हैं. तो वही मिक्सर का साउंड, मानो मैंने पहले उसको 40 फीट दूरी से सुना है, or you can record it and play on the mobile and let the child listen at a very low volume. तो वो लो वॉल्यूम में एडजस्ट हो जाता है. 8 दिनों के बाद अगर वो वॉल्यूम 1 पे रखा है तो वो 2 पे करो, जेंटल इंट्रोडक्शन, फिर 3 पे करो. ऐसे कर करके एक टाइम आएगा मोबाइल पे फुल साउंड आएगा, सुनेगा, तो फिर उसको एक्चुअली मिक्सर का साउंड मिक्सर के सामने खड़ा करके सुना सकते हैं, एंड द चाइल्ड विल बी एक्सेप्टिंग इट. सो दैट इज अ सेंसरी डिसेंसिटाइजेशन. ये आप अपने सेंसरी थेरेपिस्ट के माध्यम से उनसे डिस्कस करके ये कर सकते हो. अभी दूसरा पार्ट, या अवॉइडर के बारे में हो गया. उसके अपोजिट डिसरिगार्डर, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता. ये भी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट साउंड्स है, गाड़ी बाजू से जा रहे, हॉर्न बजा रहा है ड्राइवर, और अपने बच्चे ने सुना ही नहीं, डिसरिगार्डर बन गया, ही मे लैंड इन एक्सीडेंट्स. उसके लिए द बेस्ट आंसर, उसका जो स्ट्रॉन्ग सेंस है, मैंने पहले बताया था, visual, they see things around, they may not be having eye contact but they're seeing things around. उनके लिए visual supports are use of picture cards, use of flash cards, visual schedules, they are useful for disregarders. And disregarders के बारे में, when they listen to the sound, अपने टीचर बोल रही है, मम्मी बोल रही है, मम्मी को क्या लगता है, मेरा आंसर तुरंत देना चाहिए. डैडी जैसे तुरंत आंसर देते हैं, मम्मी का ना सुनने का डैडी को चांस ही नहीं. वैसा बच्चे ने भी चांस दे देना चाहिए. बच्चा शुड इमीडिएटली आंसर. दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन. फॉर अ डिसरिगार्डर, गिव टाइम टू रिस्पॉन्ड, लेट द चाइल्ड आंसर आराम से, गिव हिम टाइम, एटलीस्ट काउंट टू द ट्यून ऑफ 5, एंड देन यू विल थिंक ऑफ रिपीटिंग द सेम इनपुट सो द चाइल्ड विल. एंड ये करते वक्त एनकरेज द चाइल्ड टू गिव न्यूअर एक्सपीरियंस. थोड़ा थोड़ा नया नया सिखाते रहो. वो करते वक्त बाकी सेंसर इस्तेमाल करो. फॉर एग्जाम्पल विजुअल डिसरिगार्डर है, उसको आजू को देखना नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मेरा टैक्टाइल इस्तेमाल करूंगा, उसके कंधे पे हाथ रखूंगा, शायद उसको प्रोप्रियोसेप्टर लेके मेरा आई कांटेक्ट कर लूंगा, एंड दैट इज हाउ आई विल गेट कनेक्टेड विद द चाइल्ड. उसका डिसरिगार्डर कम करूंगा एंड आई विल हेल्प हिम. एंड द बेस्ट वे टू डू इट, अलर्ट द चाइल्ड. ऐसा कुछ करेंगे जिससे अलर्टिंग इनपुट्स उसको मिलेंगे. अलर्टिंग फूड भी हम उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. यू कैन यूज ऑल दिस टेक्निक. इसके बारे में थोड़ा और आगे जाके डिस्कस करेंगे. पहले क्रेवर का भी फिनिश करते हैं. क्रेवर यानी सीख, उसको सब चाहिए. उसके लिए क्या करेंगे, प्रोवाइड सेंसरी एक्सपीरियंसेस फ्रीक्वेंट. इन बच्चों को जरूरत है तो उनको बार बार थोड़ा थोड़ा देते रहना चाहिए. सो फॉर एग्जांपल, द चाइल्ड इज सपोज टू सिट फॉर अ ऑनलाइन क्लास, और ये बच्चे को वेस्टिबुलर बैलेंसिंग इनपुट ज्यादा चाहिए, तो इसको क्या करना चाहिए, मम्मी पापा ने उसको बोलना चाहिए, चलो ट्रैम्पोलिन पे जाओ, कहीं से टेबल पे चढ़ के कूदो, 4-5 बार उसको जंपिंग, ट्रैम्पोलिन पे एक्टिविटीज, बैलेंसिंग एक्टिविटीज करवा लो. थोड़ा उसका दिमाग रेस्ट होने जो, ही एंजॉयज दैट क्रेविंग पार्ट ऑफ इट. एंड ये सीकिंग कम होने के बाद उसको ऑनलाइन ट्रेनिंग के बिठाएंगे, तो विल फाइंड दैट द चाइल्ड परफॉर्म्स बेटर. बट उल्टा भी है, वो एक्साइट हुआ तो क्या करेंगे, उसके लिए कामिंग की भी जरूरत है. सो विल डिस्कस दिस अलर्टिंग एंड कामिंग नाउ. So, sir, some of the calm down activities which parents can use at the home. सिंपल, फॉर एग्जाम्पल अ चाइल्ड इज अ सीकर ऑफ वेस्टिबुलर, उसको क्या स्विंग पे बिठाएं, तो घर में एक स्विंग लगा दो, और रॉकिंग चेयर पे उसको रॉक करने को बोलो. इसको स्पिनिंग अलाउ करो. इंटरेस्टिंग पार्ट, स्पिनिंग रिपीटेटिव बिहेवियर है, पर अगर उससे उसका वेस्टिबुलर कामिंग मिलने वाला है तो उसको पहले अलाउ करो, एंड देन दैट लेट द चाइल्ड, देन वो धीरे धीरे काम हो जाएगा. दूसरी आइडिया सिंपल, आपने मुन्ना एमबीबीएस में जो बोमन ईरानी को कर रहा था डीप ब्रीथिंग,
That is wonderful way of calming down. So picture movie से भी हम कुछ सीख सकते हैं. So that is a calming technique which Boman Irani has taught us. So let's use it in another way. Squeezing something, उसके हाथ में कुछ स्क्वीजी बॉल दे दो, स्पाइकी बॉल दे दो, कुछ नहीं तो एक टर्किश टॉयल हाथ में दे दो, उसको स्क्वीज करने को बोलो. टर्किश टॉयल पानी में भिगो के दे दो, उससे पानी निचोड़ने को बोलो. These are all calming ideas. खुद को स्ट्रेच करो. That is another simple thing. पूरा स्ट्रेच करेंगे जो हम आप और करते भी है बीच बीच में. These are all प्रोप्रियोसेप्टिव के लिए स्ट्रेच करने के लिए उसको मसल्स का जो प्रोप्रियोसेप्टिव का सीकिंग आइडिया है वो कम होने वाले. उसके हाथ में कुछ, ये थोड़ा बड़े बच्चों के लिए करें, हाथ में कुछ हेवी लिफ्टिंग करने के लिए बोल दो. होल्ड समथिंग इन द हेवी थिंग, हेवी ऑब्जेक्ट इन द हैंड एंड यू विल फाइंड दैट उसको वो अच्छा लगता है. Something surprising. यानी कि सर within the house shifting one little bit heavy object from one corner to another. तो यहाँ से वहाँ कुछ लेके जाने को, मम्मी को बोलो चलो 4 अपना काम भी करवा सकते हो, ये कुछ भरा हुआ डब्बा यहाँ से वहाँ पे लेके जाओ. Is a heavy object that will take care of that calming idea. So there's some simple ideas. आप सोचने लगोगे, and if you know which sense in what, which quadrant in what, and which what is the severity, you are able to manage. Severity के लिए आपको थेरेपिस्ट की जरूरत पड़ेगी, but mild to moderate में आप खुद अपने बच्चे को मैनेज कर पाओगे. That is the motto of whole this session today. Next part we'll see is कभी-कभी ज्यादा प्रॉब्लम रहता है, वहां पे हम उसको कॉम्प्रेशन क्लोथिंग देते हैं. तो उनके हेवी जैकेट्स रहते हैं, तो ये बुलेट प्रूफ जैकेट जैसे उसको हेवी, उसमें हम सिंपल आइडिया है कि जैकेट के नीचे उसके सिम में आप सैंड उसमें सील करके रखो, वो सैंड से जैकेट हेवी हो जाता है एंड द थिंग्स बिकम इजी. रैपिंग छोटे बच्चे के लिए, और बहुत इरिटेट हुआ है तो उसको बहुत थेरेपी सजेस्ट, वो बच्चे को ब्लैंकेट में रैप करो, वो प्रेशर दे दो, प्रोप्रियोसेप्टिव प्रेशर. बेयर हग, उसको प्रेशर दे दो, दे गेट अपने कंधे में और अपने थाइज में अपने बच्चे को टाइटली लाइक अ बेयर उसको हग करो, वो सेटल होने लगता है. सो दीज आर सम सिंपल आइडियाज. अभी म्यूजिक का इरिटेशन, साउंड का प्रॉब्लम है, तो उनको बैकग्राउंड में, जिसको हम बैकग्राउंड म्यूजिक बोलते हैं, पीछे में कोई संतूर, फ्लूट, हाँ, कामिंग क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक लगा दो. ये सेंसरी, उनको बैकग्राउंड जो म्यूजिक चलता रहता है, दे काम डाउन. कभी कभी कुछ बच्चों को पानी और वो टच जो रहता है उसका सीकिंग रहता है. सो पानी के सब कहीं पे जाओ पानी में और देख देयर क्रेवर ऑफ दैट. तो मैं अभी उल्टा बोलूंगा, पानी में सब कहना ज्यादा गलत नहीं है. आगे जो एक्टिविटी करनी है उसके पहले लेट द चाइल्ड एंजॉय विथ वाटर बेस्ड एक्टिविटीज एंड दैट मे हेल्प देम वेरी वेल. इतना ही नहीं, एक्चुअल जो वाटर बॉल जैसे, वाटर बलून जैसे मिलते हैं, वो उनको हाथ में दे दो, उसमें प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट भी मिलेगा, पानी के साथ खेलना भी मिलेगा. बट दिस रिक्वायर्स अ लॉन्ग टाइम मैनेजमेंट. कभी कभी ये उल्टा भी होता है, कभी कभी बिकॉज वी गिव द इनपुट द चाइल्ड गेट्स हुक्ड टू इट एंड और एक नई मुसीबत जाती है, और कभी कभी ये नहीं चाहता. सो वी हैव टू ट्राई various also. So sensory diet, sensory strategies, ये कभी अकेले एक नहीं रहती. You have to try multiple things. For that you have to talk to your developmental pediatrician, talk to your sensory therapist, and then try it out in different ways at different timing, and you will find the best answer. So ये पानी वाले खेलने बच्चों को, उनको बलून्स के साथ खेलना पे जो बबल्स निकालते हैं वो साबुन के, उससे भी उनको फायदा होता है. So these are various ways. और एक चीज हम कर सकते हैं, we can use food as a calming technique. I think food, it comes Ashwini, who is the best person in this. थैंक यू सुनील. सो जब कामिंग डाउन के लिए फूड इस्तेमाल करना है तो इसमें सिंपल मैं 3 ग्रुप्स में डिवाइड करूंगी. पहला ग्रुप है जिसमें स्वीट फूड. आई एम नॉट टेलिंग शुगर टू गिव, बट स्वीट में बनाना आप दे सकते हैं, स्ट्रॉबेरीज आप दे सकते हैं और ग्रेप्स दे सकते हैं. ये तीनों चीजें से बच्चे काम डाउन हो सकते हैं. दूसरा ग्रुप है स्मूथ एंड क्रीमी फूड, जिसमें आई कैन सजेस्ट योगर्ट्स विच कैन बी होम मेड. सेकेंडली स्मूदीज यू कैन मेक इट एट द होम ऑल्सो, एंड पुडिंग्स, बट यहाँ पे शक्कर की मात्रा कम रखिए. तीसरा ग्रुप रहेगा वार्म फूड, और इस वार्म फूड में सूप आ जाता है, फिर हॉट चॉकलेट एंड टी. These are the very simple things which are available at home and you can use it for calming down your child. So now let's turn to alerting foods. Yeah, so now we try to calm. तो अभी alerting input, तो calming input हो गए. Now alerting input. Alerting input के लिए क्या करना पड़ेगा? Now simple things, light feather touch. तो feather का इस्तेमाल करो, soft cloth का इस्तेमाल करो, silk का इस्तेमाल करो, cotton का इस्तेमाल करो, and you'll surprisingly get very good results. ये बच्चों को, alerting बच्चों को spinning से मजा आता है.
तो स्पिनिंग ज्यादा बुरी चीज नहीं है। अगर ये स्पिनिंग बैले वाली आर्टिस्ट करती है तो उसको हम तालियां बजाते हैं, और अपने बच्चे ने स्पिनिंग किया तो उसको गालियां देते हैं, गलत बात है। तो spinning is not a bad idea. So we can use spinning as a alerting input in such cases, but it has to be used carefully with the discussion with the therapist, because it can work on both the, जो spinning नहीं कर रहा है वो शुरू करेगा, ये नहीं होना चाहिए। फास्ट रॉकिंग, उसके बच्चे को गोद में लेके उसको रॉक करो, स्विंग पे बिठाइए, that can help to ट्रिगर, स्पेशली जो डिसरिगार्डर रहते हैं उनके लिए ये अलर्टिंग इनपुट बहुत काम की चीज है। जंपिंग, सिंपल जंपिंग, छोटे हाइट से कूदो, ट्रैम्पोलिन पे कूदो, these are wonderful jumping activities which can be used in this. Aerobics, running, cycling, especially थोड़े बड़े बच्चों में, that works wonderful. इससे 2-3 चीजें एक साथ होती है, वो नेचर के साथ कनेक्ट होते हैं, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ जाती है एंड वो अलर्ट भी हो जाते हैं। तो स्पेशली स्कूल बच्चों को मैं रेकमेंड करता हूँ कि स्कूल में जाने के पहले अगर आपने ऐसे बच्चों को स्कूल जस्ट 10-15 मिनट उसके थोड़ा सा एक्सरसाइज करवा लिया, साइकिलिंग करवा लिया, सो दैट विल वर्क वंडर्स फॉर दिस किड्स। एंड द थर्ड थिंग इज ब्लोइंग ऑफ बबल्स, अगेन वो बबल निकालना, ये सब दीज आर वेरी गुड अलर्टिंग एक्टिविटीज। स्विंग पे बिठाना, क्रंची चीजें खाना, यहाँ पे उसको ट्रिगर होना चाहिए, स्टिमुलेशन। हाँ, नॉइजी गेम्स, फॉर एग्जांपल बास्केटबॉल खेलना है, थोड़े ज्यादा वेल ट्रेन बच्चों में टेनिस जैसे, बैडमिंटन, जहाँ पे फास्ट गेम्स है, फास्ट एक्टिविटीज है, और कभी कभी तो नॉइजी गेम्स जहाँ पे रहते हैं, जहाँ हल्ला गुल्ला रहता है, दीज थिंग्स अलर्ट दीज किड्स एंड दैट इज हेल्पफुल फॉर द डिसरिगार्डर्स। उनको ऐसे लाउड म्यूजिक भी फायदा होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऑटिज्म में हम क्या सुनते हैं कि उनको मेसी अच्छा नहीं लगता, बट देयर बी 2% 5% केसेस इन चिल्ड्रन विद ऑटिज्म, वहां पे उनको मेसी एक्टिविटी ज्यादा पसंद है। तो इनको कलर के साथ खेलना, क्ले के साथ खेलना, मिट्टी में खेलना, दैट वंडरफुल थिंग टू वर्क अपॉन। एंड कभी कभी कोल्ड हाथ में आइस क्यूब देना, दैट इज ऑल्सो अलर्टिंग एक्टिविटीज फॉर डिसरिगार्डेड नॉन इंटरेस्टेड चाइल्ड, अगेन टू बी टेकन वेरी केयरफुली। अभी जैसे मैं अलर्टिंग इनपुट्स के बारे में बोला था, और एक अलर्टिंग इनपुट क्या है? फूड। I think Ashwini again can tell you on better. थैंक्स सुनील। सो पहले अलर्टिंग फूड के पहले कोई पेरेंट्स को चाहिए था कामिंग फूड में फ्रूट्स के नेम, तो इसमें स्ट्रॉबेरी इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रेप्स इस्तेमाल कर सकते हैं, और तीसरी चीज है बनाना, बट आई विल से बनाना शुड बी प्रायोरिटी बिकॉज बनाना कंटेन्स सेरोटोनिन विच हेल्प्स children to really be happy and enjoyable experience with the family. Second question, one more thing regarding the chocolate. So I had suggested hot chocolate. So if the percentage of chocolate is more than 70%, then it will be giving calming effect. Now let's turn to the alerting food. Once again, I am going to divide it into 4 groups now. Previously it was with the 3 groups. Abhi chewy food. Chewy food में अगर हम देख लिए तो dates, जिसमें child has to really khajur, he has to chew it. Then the raisins, they can be helpful. Fruit gummies are nowadays commonly available. Children can use them. Secondly, sour and really spicy food. इसमें simple lemonade which can be made at home. Pickles. Usually we don't recommend pickles, but if you want it to be as an alerting input, then surely give the pickles and a lemon slice. Some children like to lick the lemon slice and it will be helpful them as an alerting input. Then the cold. Once again, the cold in a different way. Cold food like first I will say sharbat, secondly frozen peas, and if required, sometimes you can use the ice cream. The last group crunchy, जिसमें sir was saying proprioceptive input आ जाएगा, इसमें nuts आ जाएंगे, कॉर्नफ्लेक्स आ जाएंगे और क्रैकर्स, इन सभी को आप यूज कर सकते हैं फॉर अलर्टिंग द चाइल्ड। अभी हम सब सेंसरी स्ट्रैटेजीज बोल रहे हैं। आज हम बहुत कम समय में बहुत सारा कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वी आर टेकिंग इट बिट रैपिडली। हम शायद और आगे टाइम इस पे और डिटेल में बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी और एक पार्ट है, ये हो गया सेंसरी स्ट्रैटेजीज। सेंसरी डाइट, सेंसरी डाइट का मतलब क्या है? Similar to regular diet that provides us with the nutrients throughout the day. वैसे ही can we think of a diet? तो again diet बोले तो I always remember Ashwini to talk about it. Yeah, so when we are saying sensory diet, it should be spread over the day. It should be providing the adequate and the required stimuli throughout the day. So here you need to take the help of either developmental pediatrician or as well as sensory or NDT therapist. As we need the snacks throughout the day, many individuals with the sensory processing difficulties, they need the sensory snacks.
And this whole thing together, it makes the sensory diet. Now, sensory diet it has to have a combination of calming, alerting, as well as organizing activities. So इसमें calming के लिए जैसे हमने deep pressure बोल दिया था, movement, कुछ shifting of the heavy things, ये हो गया calming में. इसके साथ में क्या add कर सकते हैं? Organizing activities. It should be just at the right level, like fidgety toys इस्तेमाल कर सकते हैं, ओरोमोटर एक्टिविटीज दे इस्तेमाल कर सकते हैं, अलर्टिंग एक्टिविटीज इसमें वेकिंग अप जो रिक्वायर्ड रहता है अराउजल करने के लिए, जैसे फास्ट म्यूजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं. फिर उसके लिए लॉट्स ऑफ मूवमेंट एक्टिविटीज, ब्राइट लाइट्स, देन बिजी एनवायरनमेंट जो विजुअली बिजी है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. फास्ट स्विंगिंग कैन बी ऑल्सो यूज. सो ऑल दिस टुगेदर they will make the sensory diet, but it will be decided depending upon the needs of the particular child. So it cannot be generalized one. So now coming to the sensory preventive strategies, sir, how they can be used? I mean, this is the third thing: sensory strategies, sensory diet, and now the sensory prevention. Now let's have some simple concepts to remember. First thing is, अपने बच्चों की लाइफ में से, एनवायरमेंट से हमने कुछ चीजें निकालना अच्छी बात है. टेक आउट. So you remove something from their life, their life may become very easy. For example, you give them a new T-shirt. हमें अगर पता है that the T-shirt tag may irritate the child, cut it out. You have to remove the tag. So removing the tags. Now we are aware that उसको proprioceptive और balancing input ज़्यादा लगता है. So the teacher, the mother, what they should be doing? Instead of long hours of sitting, make the child give them break, make them move around. एक 5 मिनट के लिए उनको एक्टिविटी दे दो and वापस उनसे करो. You'll find that the quality of activity improves. Avoid unexpected touch. ये तो सबके लिए. आप कोई कंसंट्रेशन से काम करो, कोई पीछे से आपके कंधे पे टैप करेगा तो you get shocked. So that is a sensory irritation. So ये अवॉइड कर सकते हैं. कभी-कभी बच्चों को बैकग्राउंड नॉइज से अच्छा नहीं लगता. तो एक सिंपल चीज है, घर में टीवी बैकग्राउंड पे नहीं चलना चाहिए. As it is, TV is a bad sensory input. So television, mobile has to be avoided. Background noise अच्छी बात नहीं है. So we need to be taking this out of the child's life, and you'll find the child is focusing better. Sensory problems कम हो जाते हैं. उसका उल्टा, can we put in something? That is another thing. For example, light. ज्यादा लाइट तकलीफ होता है तो यूज इनडायरेक्ट लाइटिंग. जैसे आजकल फॉल सीलिंग करके लाइटिंग करते हैं, ऐसे बच्चों को उसके फायदा होता है. ज्यादा आजू शोरगुल है, यू आर लिविंग इन द हार्ट ऑफ द सिटी और यू आर लिविंग नियर अ ट्रेन स्टेशन, क्या करें? तो यू कैन यूज हेडफोन्स और सम साउंड कैंसलेशन टेक्निक्स फॉर दिस थिंग. इन बच्चों को पुट इन क्या करना है? इन बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ज्यादा टाइम देना चाहिए, क्योंकि दे गेट डिस्टर्ब व्हेन देयर इज अ चेंज इन एनवायरनमेंट. सो दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांजिशन. ये ट्रांजिशन एक इतना बड़ा चैलेंज रहता है बच्चों के लिए कि कभी कभी पूरा सेशन हम ट्रांजिशन पे डिस्कस करने वाले हैं. तो एक जगह से दूसरा, घर से स्कूल कैसे आना, स्कूल से घर कैसे आना, घर से बच्चों में खेलने, दिस आर ऑल ट्रांजिशन. सो दैट इज व्हाट वी नीड टू बी treating around. Yeah, so that is one area. Sometimes we can plan the visual boundaries. इन बच्चों को कभी कभी दिस वी आर ट्राइंग द चाइल्ड, अगर बहुत आजू बाजू एनवायरमेंट बड़ा है, हॉल बड़ा है, बिकॉज द स्पेस इटसेल्फ इज अ सेंसरी चैलेंज टू द चाइल्ड. एक सिंपल उसके लिए आपने उसके साइज का एक कारपेट देके उसके ऊपर बैठाओ. दैट कारपेट टेल्स हिम दैट आई एम सपोज टू सिट इन दिस प्लेस, एंड दैट विजुअल कनेक्ट, दैट्स अ विजुअल बाउंड्री takes care of that sensory overstimulation for this kind. So that is the put in. ये छोटी छोटी चीजें हम कर सकते हैं. So that is what we can work on. While we can teach. For example, अभी स्कूल की छुट्टी होने वाली है, नहीं तो हम किसी पार्टी में जाने वाले, तो कैन वी प्राइम द चाइल्ड कि फॉर एग्जाम्पल आज बर्थडे पार्टी है, बर्थडे पार्टी में क्लैपिंग होने वाला है, हैप्पी बर्थडे सब बच्चे जोर से बोलने वाले, आर यू गोइंग टू गेट डिस्टर्ब? नो. सो दिस इज वन थिंग वी शुड बी रिमेम्बरिंग. उनको मूवमेंट ब्रेक देना कि आपको तकलीफ हो रही है तो बता दो, आई वांट अ ब्रेक. दैट टीचिंग विल टेक केयर ऑफ देयर सेंसरी disruption or sensory integration issues. And then having them to the things are allowed in the social, give them some fidgety toys, some balls to play, some clay to handle, to say they can calm themselves better. Or having some very simple day to day activities हम सिखा देंगे. मैं बोलता हूँ नमस्ते, जोर से नमस्ते कीजिए, that is a proprioceptive input.
और फॉर एग्जाम्पल ये चलेगा ना स्पिनिंग की बजाय. सो प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट्स. दूसरी चीज, हाथों में उंगलियां डाल दो और प्रेस करो. अनदर प्रेशर इनपुट विच द चाइल्ड कैन सेटल. खुद को हक करना, थोड़ा दिखने में और दिखेगा लेकिन एक्सेप्टेबल रहेगा. अपने ही पैरों पे प्रेशर देना, that is thigh पे pressure देके बैठना. These are all simple proprioceptive ideas which can reduce the sensory challenges. Sir, I'm interrupting here. Yeah. That Dutch sir was asking. Yeah. So this is the answer to his problem, I think. The pressure with the fingers that you are telling. Pressing fingers on the corner of that is the child is actually जो corners of the furniture पे दबा रहा है because he's trying to take care of his sensory issues by pressure. Yeah. And I think that is acceptable. एक ही देखो कि उसको इंजरी ना हो एंड चाइल्ड उसको वो कॉर्नर ऑफ फर्नीचर की जगह पे खुद की बॉडी को इस्तेमाल करना सीखोगे, शायद ये सब जगह पे एक्सेप्टेबल होगा. कभी कभी से बच्चे, मैंने अब एक क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पे देना चाहूंगा, वो हमिंग साउंड निकालते हैं. दैट इज अ सीकिंग दैट हमिंग साउंड. सो that can be either sensory issue or that can be the repetitive behaviors which we discussed last time in the behavior part. So that is one of the things which we are going to discuss when it comes to sensory. I think we are now dot at 8 o'clock. हम एक दो क्वेश्चंस पूरे करेंगे, बट यहाँ पे मैं आपको एक कंक्लूडिंग रिमार्क बोलता हूँ कि दैट कंक्लूडिंग रिमार्क क्या है. हम सबके लिए sensory issues are very important. Why? Because life is 10% of what is happening to us. आज वो जो हो रहा है ना, that is 10%. While उसके ऊपर अपनी जो रिएक्शन रहती है वो बड़ी रहती है, and that is 90% of it. So that I wanted to understand about that. You should remember that how you react, and ये sensory part सिर्फ अपने बच्चों का नहीं है, मम्मी पापा का भी है. So आज से अपना बच्चा, for example, the child is showing some sensory input, sensory issue. Are you going to react your own sensory way much more than what is expected? उससे उसका प्रॉब्लम और बढ़ेगा. सो प्लीज अवॉइड दैट. आज हमने बहुत सारे, आप लोगों ने सेंसरी इश्यूज पे पूरा डिस्कस कर रहे हैं. यू मस्ट बी गेटिंग अदर क्वेश्चंस इन योर माइंड एज वेल. We are purposefully avoiding those questions together, and sorry for that answering. We'll be answering them in the pertinent such series session so that you will understand those things better. I want everybody to go home, to stop this session or say bye-bye with concepts clear about sensory. 8 senses to revise: 4 quadrants: craver, disregarder, avoider, typical. 3 levels of severity: mild, moderate, severe. 2 तरीके के मैनेजमेंट: alerting inputs, calming inputs. Alerting में inputs and food, calming में inputs and food. So all these things become very simple to understand when it comes to sensory. Though a child is going to be a combination of sensory issues, repetitive behaviors, tantrums, communication problems, and many more. And another thing which now going to be discussed in the next session, which I want all of you to come together, is on the diet and autism. Lots of myths and facts to be discussed together, and we are going to discuss them all together. So thank you all for listening to this particular session. I expect that you will be getting lots of ideas from that. This is a beginning. We are triggering your thinking, and if you become the therapist of your own self, I'm very sure you will enjoy this session. Thanks a lot for listening to us. Thank you, sir and ma'am, and thank you all the attendees. And I would certainly say that, sir, I can keep on listening to you. We are overwhelmed and absolutely honored to learn so many things today. I believe most of the queries of the parents are already solved. Regarding behavioral, I would request everyone to go back on imthebestmom.com, and the video completely available over there. The same video, today's video, will also be available from tomorrow onwards. Those who want to have little repeated knowledge about it, you can certainly go. Sir has already mentioned the number as well for precise and individual queries. You can reach out between 10 to 5 a.m. PM, I believe. Yeah. Sorry. I'm still in my senses. So, sir, next topic, sir, can we fix up the date because the audiences are still there? I think we'll have it's in the next February. So next February, similar first or second week, we'll be going ahead with the topic of diet. Yes.
Thank you very much once again, and Yeah. we'll look forward to host you everyone on February. So Yeah. Thank you again. We'll meet again. bye bye.